So namaskar all of you. तो आमर जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैचेस चलची तो करेंटली आमर बैच 3 जोटा कि आमर थर्ड मॉड्यूल टा बे पढ़ा होची पेपर 3 माइनर क्रिमिनल लॉ रो तो जेतु मॉड्यूल 2 टा कंप्लीट हेची तो तार जो टेस्ट टा होची सो सेही टेस्ट विषय रे किछि डिस्कशन करिवि तो दैट इज योर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तारी ऊपर आपनकर सेकंड टेस्ट अछि ओके सो कौन क्वेश्चंस अछि टेस्ट रो सेटा में देखिबा एंड वी विल हैव ए डिटेल डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस ओके सो 2 घंटा पेपर एटा 120 मार्क्स 120 मिनिट्स ठीक अछि ता माने जेति की मार्क रो क्वेश्चन सेति की मिनिट रे आपन को कंप्लीट करिवार अछि तो सेटा आपन को माइंड रे रखिया पे पड़ी जेति मार्क रो क्वेश्चन सेति की मिनिट से सारिबे ओके आउ 24 आवर्स पर आपन को मॉडल आंसर ता ऐप रे आपन पाई परिबे सो इंस्ट्रक्शन देखंतु 1 mark is equal to 1 minute try to complete the entire paper within time सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एपीबी पई छोट छोट क्वेश्चंस आसीबो किंतु बहुत गुडे क्वेश्चंस आसीबो ताको आपन को ठीक टाइम रे सारिया पड़िबो तेनु अननेसेसरी जिंस लिखिबेन डू नॉट राइट अननेसेसरी पॉइंट्स ओनली राइट रेलेवेंट कंटेंट जहां पचारची सेति के लिखिबार अछि ओके आउ एनरोल स्टूडेंट्स माने ताको कंप्लीट करी कि गोटिए पीडीएफ फाइल करी कि WhatsApp थ्रू रे पठेबे 9437002210 करेक्शन ओके सो क्वेश्चन 1 को चलंतु क्रिटिकली एनालाइज द लीगल प्रोविजंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 फोकसिंग ऑन सेक्शन 3 4 and 6 होला पर्टिकुलरली दे दिच ए सेक्शन सोडा ऊपर फोकस करिवार अछि डिस्कस देयर इफेक्टिवनेस इन कर्बिंग द डाउरी सिस्टम इन इंडिया तो 15 मार्क 15 मिनट डायग्राम गोटे रहइबो 15 मिनट 15 मार्क क्वेश्चन से examine the role and powers of dowry prohibition officers as outlined in section 8b of the act how do they contribute to the enforcement of the act eta be 15 mark 15 minutes okay tabare discuss the definition of dowry as per section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961 how does this definition impact the interpretation of dowry related offences 10 marks 10 minutes evaluate the penalties prescribed under section 3 for giving or taking dowry are these penalties sufficient deterrents justify your answer 10 marks 10 minutes analyze the provisions under section 4a regarding the ban on advertisements relating to dowry what challenges exist in enforcing this section 10 marks 10 minutes explain the legal implications of section 5 which declares agreements for giving or taking dowry to be void how does this affect contractual obligations 10 marks 10 minutes assess the significance of section 7 concerning the cognizance of offences under the act what procedural safeguards are in place for accused and complainant 10 marks 10 minutes discuss the burden of proof in dowry cases as shifted by section 8a how does this provision alter the standard legal procedures 10 marks 10 minutes question 9 what are the key features of dowry prohibition maintenance of list and presents to the bride and bridegroom rules 1985 5 marks 5 minutes although eita amaro nahi okay this is not there in your course re exactly dowry prohibition act अछि किंतु से जो रेफरेंस गुडा अछि कि से लिस्ट टा मेंटेन हबो कि साइन करिवो कोन करिवो सेगुडा एई रूल्स रु आपण जान परिबे आउटलाइन द पेनल्टीज फॉर सेक्शन 4 फॉर डिमांडिंग डाउरी हाउ डज दिस सेक्शन एड्रेस इनडायरेक्ट डिमांड्स 5 मार्क्स 5 मिनट्स तो इतना जो 5 मार्क क्वेश्चन रे नो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सीधा जा पचारछि सेति की 5 मार्क माने मिनिमम 4टा पॉइंट दबार अछि बेसी दे परियो त औरी भलो बट 5 मिनिट रे सारी नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन ओके describe the process and timeline for transferring dowry to wife or her heirs as stipulated in section 6 right तो एटा भी गोटे जिंस हमें देखथिलु अवश्य एथि क्वेश्चन दियाइनी किंतु मो क्लास रे करथिल सेटा कोन ना गोटे क्वेश्चन थिला मोटले पचारथिली कि
Dowry Prohibition Act is almost a gender neutral law, okay, or gender neutral act, but not a completely gender neutral one. ठीक है डिस्कस तो सेटा जो कंपोनेंट्स गुड़ा अच्छी जो कि स्पेसिफिक रिलीफ आपनकर दिया हिची कि स्पेसिफिक किछिटा प्रोविजंस अच्छी ब्राइड आउ ब्राइड को फैमिली को पई ठीक अछि तो सही पॉइंट लिखबार अछि बट सेटा आजिरो टेस्ट रे नाही से क्वेश्चन ओके तापरे क्वेश्चन 12 what powers are conferred upon the state government under section 10 of the act 5 marks 5 minutes define valuable security in context of dowry prohibition act 2 marks 2 minutes के द्वारा 3-4 लाइन लिखिबार अछि किबा 2 पॉइंट की 3 पॉइंट लिखिबार अछि what is significance of section 9 in the act 2 marks 2 minutes explain the term non-compoundable as used in section 8 of the act 2 marks 2 minutes who is authorized to try offences under the Dowry Prohibition Act as per section 7 2 marks 2 minutes तापर 1 mark question एटा खाली pinpointed answer बस सेति एटा भी just like अपना objective question भया कहि परियो when was the Dowry Prohibition Act enacted तो you know केबे enact हेची सेति खाली आपनकर लिखियार अछि जदि डेट माने अछि तो आउरी बोलो नली ईयर टा खाली लिखियो what is the minimum punishment for giving or taking dowry under section 3 1 mark 1 minute okay so this completes the total test एटा गोटे छोटो एक्ट थिला 10 टा सेक्शन रो सेत में गोटे टेस्ट रे गला आर्म्स एक्ट रो दुटा टेस्ट रहला आ एबे आपनकर जो पढुछु हमें that is the drugs and cosmetics act सेथरो भी अराउंड दुटा टेस्ट रही okay so try to give the test जो माने जॉइन करिया पे चाहउछंती एपीपी बैच को तो ताको किछिटा डिटेल्स मु कहि दउची सो एपीपी बैच रे बेसिकली हमर एटा स्टार्ट हमें करिछु पेपर 3 रु मेंस रो ओके जोटा कि नुवा सिलेबस हिसाब रे आपनकर रहउची तो सेहि थ्रू हमें स्टार्ट करिछु एंड बेसिकली जो गुडा कॉमनली हमरो ओजेएस रे पढ़ाउनी कि जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन रे पढ़ाउनी तो सेही गुडा तारी ऊपर हमरो फर्स्ट एम्फेसिस रहिछ ओके सो सेही गुडा को कंप्लीट कर देला परे जोटा कि टोटल पेपर 3 टा मेंस में आउ पेपर 4 रो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आउ आपनकर रहला जोटा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंशन ओके एति की कंप्लीट कला परे ता परे अलगा पेपर्स जोड़ा ऑलरेडी थरथर सरी जाइछि ओजेएस में ओके तो सेगुडा तापरे हमें से पेपर्स को ओके सो जोटा नॉर्मली पढ़ा हेनी किंबा जनरली सेटा जेतो हमरो एलएलबी कोर्स भी बहुत गुडे ता भितरे स्टैट्यूट गुडा नाही जेमति कि एटा हमें देखुछु ओके तो एटा आपनकर एलएलबी कोर्स रे भी नाही राइट ए जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हला ओके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ठीक अछि एटा अछि केतेटा ये रे अछि सेटा स्पेशली जो माने स्पेशलाइजेशन करछंती वुमेन्स राइट्स परिकारे एलएलएम ये रे तो से पार्ट्स गुडा हमर फर्स्ट सॉरी दैट इज पेपर 3 मेंस ओके प्रीलिम्स पई ऑलरेडी आपनकर थ्योरी पेपर्स थ्योरी क्लासेस सब अपलोडेड हे सरची तार क्वेश्चन बैंक आस्ते आस्ते अपलोड होची जेंति बीएसए रो क्वेश्चन बैंक अपलोड हे सरची 1700 क्वेश्चंस अछि सेतरे प्रीलिम्स पई ईच सेक्शन रो एटलीस्ट 10 टा क्वेश्चन अछि ओके आउ किछिटा सेक्शंस रो आपनकर मोर देन दैट क्वेश्चंस आपनकर रहउछ ओके तो सेटा आपनकर रहला देन टेस्ट करिका भी तार प्री रो ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल सेगुडा भी सेतरे इंक्लूडेड रहउछ सेमति मेंस रो भी क्वेश्चन बैंक रहउछ मेंस रो कोन रहउछ रा आपनकर गोटे पर्टिकुलर ओके सेक्शन रो दीटा मेंस रो क्वेश्चन और तार डिटेल सॉल्यूशन रहउछ तो जो माने ताको टाइम होउनी चैम्बर रो आसी आ पढिया पई आपण सीधा खाली क्वेश्चन बैंक भी सर देले केन आपण निजे भाबंतु गोटे सेक्शन रो यदि दीटा मेंस क्वेश्चन रो आंसर दिया होची मॉडल आंसर ताले बाहरु तार आ क्वेश्चंस पढिबार संभावना केते आ रहिथिबो तेनु ऑलमोस्ट आपण जदि समय रो अभाव अछि आपण डिटेल नोट्स सेगुडा पढ़ी परिबेनी जोगुडा कि सेगुडा भी इंक्लूड आपनकर करा होची
जस्ट खाली क्वेश्चन बैंक मेंस रो और क्वेश्चन बैंक प्रीलिम्स रो जदि आपण कंप्लीट भी कर दोचंदी ताले भी आपण ओके यू विल most likely be in the final list. Okay. Course भी एटा 5000 रोची और validity 2 years पे रोची online mode रे. Okay, जोड़ा कहली prelims रे detailed section wise question bank रोची, test series रोची ranking सहित video lectures रोची आपनकर ओके जोड़ा कि तीनटा old laws और तीनटा new laws अछि. ठीक समति मेंस ପାଇଁ आपनकर every class रे अपन देखिबे सबु जो नुआ मॉड्यूल स्टार्ट होची तार प्रथम क्लास टा मु ओपनली यूट्यूब रे दे दिए सेथरा अपन देखिबे कि 15 मिनिट्स आपनकर जा बेला आंसर राइटिंग होची जो माने ठीक टाइम रे लेखि की पठौचोदी मु सेठी लाइव ताकर करेक्शन भी कर दोची जो माने डेली के लेखि पठौचोदी पर्सनल ताको करेक्शन करी पठाउची ओके सो मेंस क्वेश्चन बैंक होची दीटा क्वेश्चन पर सेक्शन विथ डिटेल्ड मॉडल आंसर जेंति आंसर टा लिखिवार अछि क्लास टेस्ट जेंति आज एटा हमर क्लास टेस्ट नंबर 3 थिला ऑलरेडी आरएफ सेट रे दीटा क्लास टेस्ट सरलानी एटा जेतु एबे कंप्लीट हैला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो तार क्लास टेस्ट ओके तापरे टेस्ट सीरीज भी रहउची मॉडल आंसर सहित इंटरव्यू तो ऑब्वियसली सेटा इंक्लूडेड अछि सेटा में बाय द टाइम हमर सुनदो हमर जो फर्स्ट ओरिएंटेशन वीडियो रे मुझे कहितली कि आपनको नोटिस बाहरिबा आगुरु पेपर 3 आउ पेपर 4 रो जो पार्ट्स उडा आपण पढी नांती माने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पेपर 4 रो आउ ड्राफ्टिंग प्रीडिंग कन्वेंसिंग पेपर 4 रो सेगुडा कंप्लीट हे जाइथि ओके तो तापरे आपे फोकस प्री ऊपर आडिबा एवरीडे लाइक 100 क्वेश्चंस हमें ताको रिवाइज कर परिबा प्रीलिम्स में काहे ना एटा ओजेएस प्रीलिम्स बलिया नो कि 41 रखंतु तो मेंस लेखिबे एथरे डायनामिक कट ऑफ जिवो कट ऑफ मिनिमम 60 आउट ऑफ 100 मिनिमम ताडो अधिक भी जाई पारे ओके बिकॉज़ यू नो द लेवल ऑफ कंपटीशन ओके कहना एपीपी रे किछि चेंजेस हेइनी कि हबारो भी संभावना कम लास्ट ईयर भी 2 वर्ष एक्सपीरियंस रा ए वर्ष भी मोस्टली 2 वर्ष एक्सपीरियंस रहइबो कि पिला ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि अछंती 2021 रे लास्ट टाइम हेतिला ओके तो एथरे बेसी किछि चेंजेस हबारो नहीं तो कंपटीशन विल बी वेरी टफ लास्ट ईयर पिला थिले जो माने 0.5 0.7 1 मार्क 2 मार्क्स रे कटि थिले ओके तो से माने आउरी बेटर प्रिपेयर्ड है कि थिले एटलीस्ट प्रीलिम्स पई तो ओके प्रीलिम्स ना क्वालिफाई कॉलेज में मेंस रे बसिबी ओके तो एठी प्रीलिम्स टा बहुत आपनको सीरियसली नबर अछि ओके इट इज नॉट अ स्टैटिक कट ऑफ लाइक इन जुडिशियल सर्विस की 40 मार्क्स रखि देले हे गला ओके 100 भीतर एठी डायनामिक कट ऑफ जिवो 60 जाई पारे 65 जाई पारे ओके हाई कट ऑफ जिवो जा भी राइट सो एबे तो एटा हमर ऑनलाइन ही रहउची कोर्स टा ओके सो एबे जो नुआ बैच स्टार्ट हेची सेटा हला आपनकर 26 मई रे स्टार्ट हेची जोटा आपनकर ड्रग्स ओके एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ओके so those who are interested and those who have the eligibility or those who will have the eligibility before that notification is published hela notification kebe publish hobo well e paryanto OPSC ki requisition jaini teno kaya gale time ache ebe okay so time ro maximum utilization karantu kaina once notification asi gala apna syllabus ta dekhantu syllabus ta OJS syllabus to bada achi right OJS syllabus to बड़ अछि नोटिफिकेशन बाहरिबार प्रीलिम्स हबार 2 months जनरली रुए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू आपन प्रीलिम्स पई 2 मास धरंतु देबे तापरे प्रीलिम्स रो मेंस पुनी आउ 2 मास धरंतु ओके सो सेही हिसाब रे आपन देखिबार अछि तो आपन निजे भाबंतु जो माने बाबुथिबे कि मु तापरे प्री सरले मेंस वे प्रिपेयर करबी आपन 2 मास रे चारटा पेपर जदी प्रिपेयर कर देबे ताले इट इज फाइन किछ असुविधा ओके पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 मेजर क्रिमिनल लॉ सेटा ओजेएस में प्रिपेयर करछो तो प्रिपेयर ही कि अछि प्राय हला पेपर 3 टा पूरा प्रिपेयर करे पड़िबो पेपर 4 रो किछि पार्ट्स प्रिपेयर करे राइट सो जो नंबर अछि और स्क्रीन रे जोटा भी स्क्रॉल होची 7684054656 सेथरे आपण कॉल करिकी आउ जॉइनिंग डिटेल्स और बाकी डिटेल्स जदी क्वेश्चंस करिका अछि सेटा पचारि पर सो बेस्ट विशेस स्टडी हार्ड आउ समय मोटर नष्ट करंतुनी इन द सेंस दैट केते बेले कोन नोटिफिकेशन बाहरिबो आपण नोटिफिकेशन तो बाहरिबो सिलेबस चेंज टा नोटिफाई हि कि माने नोटिफाई तो से माने करिवे आज न कर परंती 15 दिन परे करिवे मास परे करिवे ओके
तो से टाइम टा वेस्ट करंतुनी हाईली कॉम्पिटिटिव हे जिवो जिंसटा स्पेशली विथ एलिजिबिलिटी ऑफ ओजेएस चेंजिंग ओके तो सेटा भी बहुत बड़ इफेक्ट आ ऊपर पकेबो ओके हम सबू वीडियोस रे कहूची आउ थरे कहबी गोटे डिफरेंस रहउची एपीपी रे कोन एठी जो ओडियाटा दरकार सेटा 8th स्टैंडर्ड नो 10th स्टैंडर्ड हैला तो सेटा टिके माइंड रे रखबे यू नीड इधर 10th क्लास रे आपण ओडिया सब्जेक्ट देइथिबा दरकार यदि आईसीएसई सीबीएसई मीडियम को अछंदी किंबा आपण जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो तार एग्जाम करूची ओके तो सेही 10th लेवल रो एग्जाम टा पास करथिबा दरकार नॉट 8th ओजेएस पई 8th रो दरकार एडीएल पई 8th रो दरकार एपीपी पई 10th रो दरकार हैला तो सेटा माइंड रे रखबे सो बेस्ट विशेस नमस्कार।